Welcome everybody to this new lecture of electronic communication system. Today we will continue our discussion over envelope diode detector, and in our previous lecture we were discussing about some waveforms like this, and also like this, like this. So these are the exceptional cases in the output waveform. Why output waveform is distorted like this? Why when the RC, that is the time constant of capacitor or time it takes to discharge completely, is greater than 1 over Fm, that is 1 over inverse of modulating frequency, then the capacitor voltage does not follow this envelope. And also in the case of when RC is less than 1 over Fc, that is the time constant of capacitor, less than the inverse of carrier frequency, then there is also an exceptional cases where again the capacitor voltage does not follow this envelope. Instead of following this envelope, the capacitor voltage follow the carrier wave or voltage or the waveform of carrier wave. So this should not be happen. This should not also be happen, and this is also an exceptional cases of when the modulation is greater than 1. That is, this is the case of over modulation. This is the case of over modulation. So these are 3 exceptional cases. Let us take a reminder on these 3 output waveforms. This is the first case, that is under modulation when MA is less than 1, or you can say it that the peak modulating voltage is over the ratio of peak modulating voltage to the peak carrier voltage is less than 1. Hence modulation index of amplitude modulation index, you can say it as modulation index is less than 1. That is the case of under modulation. This type of waveforms or this type of signal, modulating signal, we receive at the output, and this is the case of 100% modulation. This is the case of 100% modulation. These all waveforms comes from our last discussion when MA is equals to 1 or EM over EC is equals to 1. So the modulating signal is of this type, and this is the case of over modulation when MA is greater than 1, that is EM over EC, the ratio of EM over EC is greater than 1, and the output waveform is distorted here. So the best case is this. The best output modulating voltage is this, because the information is contained into this envelope, and we have to extract this envelope from the modulated waveform. So when modulation is 100%, we get a perfect modulating signal, that is we have a perfect voice signal or message or information at the output of envelope diode detector. Okay, so these are 3 cases, and the best one is when the modulation is 100%. Modulation is 100%. Okay. Now do some mathematical concept over this old discussion as we discussed in this lecture. We will discuss in this lecture, and we were discussing in our last lectures. So do some mathematics here. So the expression for amplitude modulated wave is ET is equals to EC 1 plus MA cos omega t cos omega CT. This is the expression of amplitude modulated wave. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ओके, और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में ही इंफॉर्मेशन सिग्नल छिपा हुआ है. उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को हमें यहाँ से
अलग करना है. एंड एनवलप इज दिस EC into 1 plus MA cos omega t. Okay. The condition for time constant RC to follow properly the envelope is, वो कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज का जो स्लोप है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्लोप ऑफ इनपुट सिग्नल, दैट इज स्लोप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो जो हमारे पास प्रॉपर एक्सट्रैक्शन है, बिल्कुल सही से जो इन्फॉर्मेशन जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाती है. यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से हम उस काम को कर पाएंगे. कब? जब स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्लोप ऑफ इनपुट सिग्नल, दैट इज द स्लोप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दैट इज स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज. कैपेसिटर वोल्टेज को हमने VCT कहा है, V वोल्टेज, C स्टैंड फॉर कैपेसिटर बिकॉज इट्स टाइम वेरिंग फंक्शन, सो डिनोटेड एज VCT, should be greater than or equal to the slope of envelope, and envelope is this. This is the modulated wave equation. Okay, so let us see here this. So dVCT in mathematical form, we can say that verbally form that the time rate change or slope of capacitor voltage should be greater than or equal to the time rate change or slope of modulating signal or slope of envelope. Okay, and these are all about magnitude. That's why these two quantities, the slope of capacitor voltage and the slope of envelope, is into the mode brackets. Okay, into the mode, you can say it. Okay, the capacitor voltage equation when it discharges. तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज, कैपेसिटर के वोल्टेज का जो इक्वेशन है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है, तो वो है VCT इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस T ओवर RC, इस तरह. और जब वो चार्ज करता है तो यही इक्वेशन हो जाती है VCT इक्वल्स टू E प्लस T बाई RC. लेकिन हम डिस्चार्ज की हम बात करें, द कैपेसिटर वोल्टेज व्हेन इट डिस्चार्जेस इज इक्वल्स टू VCT इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस T ओवर RC, दिस. और we can write it that VCT is approximately equal to E1 minus T by RC using this concept, E to the power X, expansion of V to the power X, exponential X is equals to 1 plus X over factorial 1 plus X square over factorial 2 and plus up to 2. And when we expand E to the power minus X, it will be 1 minus X over factorial 1 plus X square over factorial 2 minus X cube over factorial 3. That is the odd power with minus and the even power with plus sign. Okay, so the capacitor voltage approximately equal to E into 1 minus T by RC, because here is in place of X we have minus, or you can say it as T over RC. In place of X you have T over RC, because e to the power X has expansion of this type, e to the power minus X has expansion of 1 minus X over factorial 1 plus X square over factorial 2 and minus X cube over factorial 3 and up to 2. Okay, so the capacitor voltage is equals to E 1 minus T by RC, this. And when you differentiating as with respect to T, or time derivative of capacitor voltage is dVCT over dt is equals to minus E by RC, and the magnitude of this voltage dVCT over dt is equals to E by RC. This is the magnitude. Only we are here dealing with the magnitude only. That's why this negative sign is eliminating from here. Say this is equation number 2. Okay. Now envelope, because envelope is
given by this type of equation, E is equals to EC 1 plus MA cos omega mt. This is the part of this equation. This, look at here, this is the amplitude modulated wave, EC 1 plus MA cos omega mt into cos omega CT. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप मॉड्यूलेटेड आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, तो आप पहले कोस का वेव फॉर्म ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर आप इस वेव फॉर्म को ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट, मॉड्यूलेटेड वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो इसमें से एनवलप ये है, इंफॉर्मेशन केवल यहाँ है। किस पार्ट में इंफॉर्मेशन है? EC 1 प्लस MA, चूंकि EC तो इस पूरे ब्रैकेट से बाहर है तो EC तो आएगा ही आएगा। सो EC द पीक कैरियर वोल्टेज 1 प्लस MA cos ओमेगा, इस हिस्से में केवल इंफॉर्मेशन है। इसमें यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो कैरियर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो टर्म है ये केवल कैरियर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई बात नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि ये वाला वो एनवलप है जिसको हमें यहाँ से अलग करना है। यानी ये वाला हिस्सा EC 1 प्लस MA cos ओमेगा, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ इंफॉर्मेशन, तो यही हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज का स्लोप हो वो बड़ा होना चाहिए, should be greater than or equal to the slope of इनपुट सिग्नल। यानी स्लोप का मतलब ये है कि अगर इक्वल स्लोप है कैपेसिटर वोल्टेज का और किसका, एनवलप का। आप ये मान लीजिए जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली आप उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन, या तो बड़ा हो, और इक्वल टू द स्लोप ऑफ एनवलप। अब एनवलप जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो रिप्रेजेंट की गई है ET इज इक्वल्स टू EC 1 प्लस MA cos ओमेगा mt इंटू cos ओमेगा CT, इससे रिप्रेजेंट की गई। जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो इससे रिप्रेजेंट की है। इसमें जो एनवलप है जहां इंफॉर्मेशन छुपी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि इस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो ये वाला हिस्सा है, ये एनवलप है। यहाँ इंफॉर्मेशन है, इस एनवलप को हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। इस एनवलप को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द स्लोप ऑफ एनवलप। अब आप ये देखिए कि मैं अगर स्लोप को यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, एक केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मैं VCT वर्सेस टाइम एक ग्राफ में प्लॉट करता हूँ और मैं कहता हूँ कैपेसिटर वोल्टेज कुछ इस तरह का है। इसमें जो टाइम के साथ वेरी करता है कैपेसिटर वोल्टेज इस तरह। तो जो स्लोप है कैपेसिटर वोल्टेज का वो या तो स्लोप ऑफ एनवलप के बराबर हो या स्लोप ऑफ एनवलप से बड़ा हो। तो अगर मैं यहाँ एनवलप यानी कि मैं E को, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E को, और T के साथ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो बिल्कुल जो ग्राफ होना चाहिए, एक्चुअल आइडियल कंडीशन ये है कि इसी ग्राफ को फॉलो करना चाहिए। यानी मैं इसी बात को दूसरे तरीके से इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास सिग्नल इस तरह का है, मेरे पास सिग्नल इस तरह का है, इस तरह के सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, सो जो स्लोप आए कैपेसिटर वोल्टेज का वो भी बिल्कुल उसी एनवलप को फॉलो करता हुआ आए इस तरह से। अगर ये मैं कहूँ कि ये एनवलप है, ये जो वेव फॉर्म है ये एनवलप की है या उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की है, उस इंफॉर्मेशन की है जिसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ इस ग्राफ कहता है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसी को एनवलप फॉलो करता है, या मैं कहूँ कि एनवलप की वोल्टेज को कैपेसिटर की वोल्टेज फॉलो करती है, तो ठीक इसी तरह अगर एनवलप को मैंने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ किया गया है तो कैपेसिटर भी की जो वोल्टेज है वो भी इस एनवलप को फॉलो करनी चाहिए, इस एनवलप को फॉलो करना चाहिए। जैसे वो यहाँ फॉलो कर रही है ऐसे ही उसे यहाँ भी फॉलो
करना चाहिए। इसीलिए ये मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ ड्रॉ किया गया है कि स्लोप ऑफ कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एनवलप। तब इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द, हम रिकवर कर पाएंगे फ्रॉम द modulated इनपुट। ओके, सो लेट्स सी इट। तो हमने यहाँ इस तरह का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कंसिडर कर लिया है। हमने स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज dVCT इक्वल टू, और यू कैन से इट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द capacitor, slope of capacitor voltage is equals to E by RC. Say this is equation number 2. इसको हमने कहा है equation number 2. Okay. Now the envelope is this. envelope ये, इस equation से हमने envelope को denote किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। So इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ एनवलप, और फिर वो मैथमेटिकल कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे, दैट इज स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एनवलप, एंड दैट इज इक्वल टू DE by dt, दैट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ एनवलप, यू कैन से इट, और स्लोप ऑफ एनवलप वोल्टेज इज इक्वल्स टू EC MA m sin omega t. Okay, differentiate this function with respect to t. Okay, EC is constant, so same here. MA is constant, same here. Differentiating this function with respect to t, differentiation of cos theta with respect to theta. So d by d theta or d by dt of cos omega t gives you sin omega mt with minus sign, and differentiation of omega mt again gives you omega m. So d by dt, that is the slope of envelope voltage, is equals to minus EC MA omega m sin omega mt. Okay, and when you take the magnitude of this voltage will be equals to EC MA omega m sin omega mt. This is equation number 3. This is equation number 3. This equation number 2 gives the magnitude of capacitor voltage and capacitor voltage, or you can say it slope of capacitor voltage. This equation gives the magnitude of slope of capacitor voltage, and this equation gives you the slope of magnitude of slope of envelope. Okay, so this is equation number 3. So on putting these value into equation number 1, इन values को आप equation number 1 में put कीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? आप या तो मैथमेटिकली इक्वेशन नंबर 1 इसे कह सकते हैं, यहाँ ये वाली इक्वेशन मैथमेटिकली, या तो इक्वेशन नंबर 1 आप इसे कहिए, या फिर वर्बली आप इस इक्वेशन को भी मैथमेटिकली आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इस इक्वेशन को, दैट इज द स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज VCT शुड बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द एनवलप। इस इक्वेशन को भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो चूंकि मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हमारे पास है, तो हम इस इक्वेशन को ही इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं, यानी जो स्लोप आया है हमारे पास कैपेसिटर वोल्टेज का, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्लोप ऑफ एनवलप वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ envelope voltage. So put these values of mode of dVCT over dt from equation number 2 and mode of dE by dt from equation number 3, this equation number 3 into equation number 1, this mathematical form. We have this E by RC, this equation number 2, the result of this equation should be greater or equal to EC MA omega m sin omega t, this result given by equation number 3. Okay, from here we can rearrange these terms and we can get 1 over RC, this is the time constant of capacitor, should be equal to or greater than EC MA omega m sin omega mt over E, this. या फिर हम इसी टर्म को लिख सकते हैं 1 over RC should be equal to or greater than EC MA sin omega mt is same,
this numerator is same, and the value of E we have this E equals to EC 1 plus MA cos omega MT. So put the value of E here. Put the value of E here. We have EC 1 plus MA cos omega MT. EC is cancelled with EC, and we are left with this 1 over RC should be greater or equal to MA omega M sin omega MT over 1 plus MA cos omega MT. Say this is equation number 4th. Okay. Now to calculate the maximum value of right hand side. To calculate the maximum value of right hand side, we have to differentiate it with respect to t and then equate it equal to 0. पहले हमें राइट हैंड साइड की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें पहले इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 के बराबर। और ये रूल हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन में बहुत मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से एक चैप्टर होता है वहाँ, तो वहाँ हम पढ़ते हैं अगर किसी भी क्वांटिटी के आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप उसे क्या करें, उस क्वांटिटी को पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, और उस डिफरेंशिएशन को आप 0 के इक्वेट कर दें, और जो भी वहाँ से वैल्यू मिले आपको वापस उस इक्वेशन में रख के हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ करने जा रहे हैं। हमें ये जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास 1 ओवर टाइम कांस्टेंट है, यानी यहाँ से तो लगभग ये डन हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड में जो काम करना था हमें। राइट हैंड साइड में हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी कैलकुलेट करनी है, चूँकि हम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें यहाँ इक्वेशन इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी, और फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो वही कुछ वैसा ही हम कर रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिस, and this should be equal to 0 for the maximum value of this. Okay, so let's do this. So simply you can differentiate it with respect to t by this type of formula. Okay, this the Leibniz dividation formula. I think this is the square of the denominator is same, differentiation of the numerator plus, actually here is minus because differentiation जब हम करेंगे इसका तो उसकी वजह से वो माइनस प्लस इसके कर देगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज सेम। इस तरह की इक्वेशंस को हम यूज कर रहे हैं, और इस इक्वेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल एक्सप्रेशंस हैं जिसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप कुछ इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ एम ए ओमेगा एम साइन ओमेगा टी, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो मैं यहाँ ये एक्सप्रेशन आपको, और फिर उसी रिजल्ट को हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ एम ए ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी ओवर 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी। ये इस एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंस लेबनीज का जो डिवाइडेशन वाला फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं हम। 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी, ये इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, यानी जो डिनोमिनेटर में है यहाँ इसका होल स्क्वायर। फिर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको एज इट इज रखा 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी, इसको हमने एज इट इज। डी बाई डी टी हम करेंगे न्यूमिनेटर का, यानी एम ए ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी, ये हमने कर दिया। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जो न्यूमिनेटर की टर्म है उसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, एम ए ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है डी बाई डी टी करेंगे हम
डिनोमिनेटर का, यानी 1 प्लस एम ए कोस ओमेगा एम टी। कुछ इस तरह का प्रोसेस हम करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। सो this equation is as it is, this term is as it is, 1 plus ma cos omega mt. Okay, this term is as it is, and when you differentiating this term, ma omega m is constant, so differentiation here is only with sin omega mt, and because differentiation of sin theta gives you cos theta, but here is omega m, so differentiation of omega mt gives you extra omega m. So actually here we have ma omega m square and cos omega mt, this, and with minus sign, this sign is minus, ma omega m sin omega mt is as it is, and differentiation of this term, so differentiating this term with respect to t, differentiation of 1 is a constant quantity number, so differentiation with respect to t gives you 0, and d by dt of ma cos omega mt. So ma is constant, modulation index is, and differentiation of cos theta gives you minus sin theta, and because of that minus, this minus is plus, this minus will be plus, and again differentiation of omega t gives you extra omega m. So actually this term gives me ma, minus is consumed here, and because of this minus will be plus, ma omega m and sin omega mt, this, and the denominator is same, 1 plus ma cos omega mt whole square. Okay, now this, so 1 plus ma cos omega mt and ma omega m square cos omega mt plus this ma, so ma square, omega m, so omega m square, and sin omega mt and sin omega mt, so sin square omega mt, and the denominator is same, this. So this, now if you multiply this term with this bracketed term with this term, so ma omega square, ma omega m square cos omega mt multiplied by 1 gives you the same term, ma omega m square cos omega mt, and plus ma is multiplied by ma, so gives you ma square omega m square, and cos omega t multiplied by cos omega t gives you cos square omega mt, and plus ma square omega m square sin square omega mt, and the denominator is same. So look at here, last two term into the numerator, ma square omega m square cos square omega mt, and ma square omega m square sin square omega mt. So in these two terms, ma square omega m square, these are common, and cos square omega mt plus sin square omega mt gives you 1. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So ma omega m square cos omega mt plus ma square omega m square, and because of this plus this gives you 1, over denominator is same. So this value is the resultant of differentiation of this quantity with respect to t. So let's see the result, and result is this.
result is this: 1 plus ma cos omega mt, because denominator is multiplied by this right hand side 0, so denominator is 0 and we are only left with numerator terms, this 1 plus ma cos omega mt, ma omega m square cos omega mt plus ma square omega m square sin square omega mt is equals to 0. And when you multiply this term with 1, gives you this same term, ma omega m square cos omega mt, same term. And when this term is multiplied by this term, look at here, ma, so ma square, omega m square, and cos omega mt is multiplied by cos omega mt, gives you cos square omega mt. Okay, and this is the same term here, ma square omega m square sin square omega mt equals to 0. This is equals to 0. Okay, so look at these two terms. Look at these two terms. These, the last two terms, ma square, omega m square. Here is cos square omega mt and here is sin square omega mt. So take common ma square and omega m square from the last two term. We have omega m square is here, ma cos omega mt is same, ma square omega m square is common from the last two term, and we are left with cos square omega mt plus sin square omega mt, and this will be equal to 0. Okay, now because omega m square is common from here, and that not equal to 0, so ma cos omega mt and ma square, because this term will be equal to 0, so ma cos omega mt plus ma square equal to 1. Ma is again common, so cos omega mt plus 1 equal to 0, because ma, the modulation index, does not equal to 0, so ma is equals to cos minus cos omega mt, this, and cos omega mt is equals to ma. Okay, now sin omega mt, what is the value of sin omega mt? Sin, this is simply square root of 1 minus cos square omega mt, and the value of cos square omega mt is ma square. So actually sin omega mt gives you root 1 minus ma square. This is equation number 6 and this is equation number 5th. On putting these value from equation number 5th and 6th into equation number 4th में आप पुट कर दें, और 4th जो इक्वेशन है हमारे पास वो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन 1 over RC should be greater equal to ma omega m sin omega mt वाली टर्म भी है हमारे पास यहाँ, और cos omega mt वाली टर्म भी है हमारे पास यहाँ. तो इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ इक्वेशन नंबर 4th में जब पुट करेंगे तो 1 over RC ma omega m, this is the value of sin omega mt, and 1 minus because here is into the denominator 1 plus ma cos omega mt, and the value of cos omega mt is minus ma. So with this minus sign, this plus sign will be minus. So 1 minus ma square. Look at here. 1 minus ma square. Okay, 1 minus ma square is cancelled with 1 minus ma square. So y square root is coming into the denominator side. So RC should be less than or equal to root of 1 minus ma square ma omega m. इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए, इस रिजल्ट को फॉलो कीजिए, और जो 3 एक्सेप्शनल केसेस हम वहाँ स्टडी करके उनमें से कोई भी घटित नहीं होगा. एक बेहतरीन एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगी, और यही हम चाहते हैं कि जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म है वो किसी भी तरह से डिस्टॉर्टेड ना हो, क्लिप्ड ना हो, और एक जो वॉइस सिग्नल, ओरिजिनल वॉइस सिग्नल हमने इनपुट में दिया था, वही ओरिजिनल वॉइस सिग्नल हमें डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में मिल जाए, और वो ऐसा इन कंडीशन के थ्रू हो जाएगा. अगर इस कंडीशन टाइम कांस्टेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस ma स्क्वायर रूट 1 माइनस ma स्क्वायर ओवर ma ओमेगा, इस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे, सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. ma मॉड्यूलेशन की परसेंटेज इंडेक्स का ma की वैल्यू आपको पता है 0.5, 0.2, 0.3, 0.1, जितना भी है 1,
मैक्सिमम 1 MA ओमेगा एम। फ्रीक्वेंसी आपको पता है मॉड्यूलेटिंग जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, तो RC यहाँ से तो RC को उस पर सेट कर दीजिए। जो टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग टाइम है, फुल डिस्चार्जिंग टाइम है कैपेसिटर का, आप इस कंडीशन पे उसे सेट कर दीजिए। तो ओरिजिनल जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसा हमारा इनपुट सिग्नल में वो सिग्नल था, उसी फॉर्म में हमें यहाँ आउटपुट में भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या वो वॉइस सिग्नल हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम एनवलप डायोड डिटेक्टर का यूज करते हुए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में एक बेहतरीन एक्सट्रैक्टेड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ and meet you into the next one. Thank you.